Hello friends, welcome back to my channel. And in this video, we are solving June 2021 term and examination paper of MCO 07, right? And this is financial management, and we will solve all the questions, all the 9 questions. And I hope there are 2 numericals, and the rest are theory questions. So let's start with the first question. The first question, as you can see, in this is the original paper. Explain the basic financial decisions. How do they involve risk return trade off? Uh, the question is of 20 marks, and this is the solution that I have written. Now, first, you will write the definition of financial decisions. Financial decisions are decisions taken by financial manager regarding the management of finance, how to raise money, what should be the capital structure, what should be the proportion of equity and debt capital, where to invest, and how much to invest. So all these questions has to be answered by the financial manager. And even like जब आप इसको expand करोगे तो ये सब questions को आप डिटेल में थोड़ा सा और लिख सकते हैं. Then the 3 types of financial decisions. ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था. द 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस. नाउ investment decisions, it relates to decision regarding the investments in different assets like securities, assets, instruments like that. And financing decisions relates to raising finance through equity and debt capital. And dividend decisions relates to how much dividend should be paid to the shareholders and how much to be retained, right? So this is how you can expand a little bit, right? Now let's see the second part of the question. The risk return trade off is a principle of investment. It states that higher the risk, higher will be the reward. Risk is directly proportional to reward, and by using this principle, an investor takes his financial decisions. It helps to compare the amount of risk associated with his investments. It depends on few factors like how much risk on an investor can sustain and which stocks can be replaced. Now, a proper balance between the risk and return should be maintained to maximize the market value of investments. And this is known as risk return trade off. Okay, so let's move on to the second question. And the second question is this: why are cash flows important in investment decisions? Explain. 10 marks question, and let's see what should be the solution. Now, investment decisions refer to buying and selling of fixed assets, securities, bonds, instruments, etc. It is very important that how much cash is generated and spent on these activities, and helps to find the financial position of the firm, right? And some important other important key sentences here. Cash flows are calculated from cash flow statements. It helps to prepare budgets and capital structure. It helps to find how much liquid cash a firm has for the investment purpose. So like that, you have to write the importance of cash flow investment, and this is the numerical. Fine. Question number 2, part B. This is the numerical of 10 marks. Very easy question. Let's see the solution. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी हुई है. आपको कैश फ्लो दिया हुआ है, एंड यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट हैं, ए बी सी, एंड C0, C1, C2. C0 मीन्स जो फर्म के पास में जो कैश फ्लो ओरिजिनली जो था, राइट? सो -25,000, -25,000, -25,000. इन द फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट ए में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. सेकेंड प्रोजेक्ट में 15,400, लाइक दैट प्रोजेक्ट सी में 28,750. ओके, इन द सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट ए में 33,050 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो है. प्रोजेक्ट बी में 15,400 का है, एंड देयर इज़ नो कैश फ्लो इन प्रोजेक्ट सी. यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%, एंड
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट एन्युटी टेबल आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन है, फाइंड द एनपीवी. एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके, ऑफ फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड विच प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल एंड वाई. तो ये क्वेश्चन है एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन. राइट, मैंने इसको एक्चुअली MCO07 की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए. नाउ प्रोजेक्ट ए, जैसे कि प्रोजेक्ट ए में फर्स्ट -25,000 प्लस जो आपका फर्स्ट ईयर में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जिसको बोलते हैं हम लोग PV, ठीक है, 0.893 है. तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कैश फ्लो ज़ीरो है प्रोजेक्ट 1 में, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.893, राइट. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन हियर. एंड प्रोजेक्ट ए में सेकेंड ईयर में 33,050 का इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाइड विथ द प्रेजेंट वैल्यू of ₹1, 0.797. So after multiplication and addition you will get 1,340 rupees 85 पैसा. Similarly हम लोग प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेशन करेंगे. लाइक ज़ीरो कैश फ्लो हो रहा है फर्स्ट ज़ीरो ईयर्स में, -25,000. अगेन फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कैश फ्लो 15,400 रुपीज़ का है, मल्टीप्लाइड बाई 0.893. तो ये मल्टीप्लाई करना है. देन अगेन इन द सेकेंड ईयर कैश फ्लो इज 15,400 मल्टीप्लाइड बाई 0.797. तो लाइक दैट हम लोग प्रोजेक्ट सी का भी सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे. एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो दैट प्रोजेक्ट ए में आपको ये 1340 का NPV मिल गया एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी इज़ 1026 एंड प्रोजेक्ट सी का 673 रुपीज़ 75 पैसा. सो ये सबसे कम है और सबसे अच्छा है प्रोजेक्ट ए. तो एज बिकॉज द NPV ऑफ प्रोजेक्ट ए इज़ बेटर, सो प्रोजेक्ट ए इज़ टू बी चूजन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए. What do you mean by appropriate capital structure? What should be the feature of an appropriate capital structure? 3 + 7, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से आप फ्रेम करोगे. द कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच द इक्विटी डेट कैपिटल मार्केट वैल्यू इज मैक्सिमम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. सो दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे इक्विटी डेट का अच्छा बैलेंस हो एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द लिस्ट, सबसे कम हो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर. और इसके जो मेन फीचर्स हैं एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकते हैं. इट शुड बी प्रॉफिटेबल, राइट, मतलब कंपनी का फर्म का प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने में हेल्प कर सकती है. देन सॉल्वेंसी, ओके, सो वी कैन फाइंड द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी and it should have a better control. The company can control this. Okay, let's move on to question number 3, part B. And the question says discuss the net income approach of capital structure. Now ये मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, देखना आपकी जिम्मेदारी है, राइट. Now, NI approach was introduced by Durant. According to this theory, the market value of a company can be increased by decreasing the cost of capital and increasing the debt capital. Now, cost of capital is measured by WACC. Now, this stands for weighted average cost of capital. And as we know that debt capital is a cheaper source as compared to the equity capital. So, WACC is the weighted average cost of debts and equity capital. So, ये पैराग्राफ को थोड़ा और आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द मेन एजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल. एजम्पशंस आर देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ कैपिटल सच एज डेट एंड इक्विटी. द मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म इज नॉट अफेक्टेड इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द डेट कैपिटल. ठीक है. ऑल कंपनीज हैव यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज 1:1. देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट
tax, income tax, all that. There is perfect competition in the market, which means all the companies are known to the investors, and investors are rational. That means they want to maximize the return on their investments. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. Now let's move on to question number 4. And this is the question, why do firms pay dividends? इसके ऊपर भी वीडियो है. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ए स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. जो मैंने आंसर्स लिखे हैं मैं आपको रीड आउट करके एक्सप्लेन करता हूँ. इनकम अर्नड बाय शेयर होल्डर्स फॉर देयर फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स इज कॉल्ड डिविडेंड्स, एंड ड्यूरिंग ए गिवन ईयर if a company makes sufficient profits, it is likely to distribute a part of its profit to the shareholders after retaining some profits, right? But not all the companies pay dividends. It depends on the policy of the company whether it wants to reinvest the whole of the profits for its growth or expansion or would distribute as dividends, right? तो ये तो समझ में आ गया, बहुत easy language में लिखा हुआ है. एंड सम कंपनीज पे डिविडेंड्स बिकॉज, जो यहाँ पे क्वेश्चन में है एडवांटेजेस, तो देख लेते हैं इसका मेन एडवांटेजेस क्या है डिविडेंड पेमेंट का. इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड्स, राइट? इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स दैट द फर्म हैज़ गुड फाइनेंशियल पोजिशन. It increases the demands for their stocks. It increases the market value of the shares. The company has stable growth. It increases the market worthiness of the company, and the company can get easy loans from the market. And regular dividend acts as a source of income for few shareholders, generally the aged shareholders. Let's move on to the next question, part B. Describe the rationale for buyback of shares. इसके ऊपर भी वीडियोस है, आपको लिंक जरूर से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से देखिए उसको. एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द कंपनी, राइट? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेट्स सी द आंसर. Buyback of shares refers to repurchase of shares by a company which it had issued earlier to the shareholders. It is done by paying the shareholders back at the market value, either in the open market or directly. Now, what are the advantages? It helps to reduce excess share capital not required presently. It helps to increase the reserves of a company. It helps to protect against unfriendly takeovers from other companies. Now, this is very important point. Then it increases EPS and P ratio, that is earning per share and profit earning ratio. It increases the market value of shares if the company thinks that its shares are low valued, and it results in saving of taxes. So this is how you have to compose the answers. Now let's move on to the next question, and the question is this: explain the objectives of credit policy. Again, very important chapter. What is the role of credit period and credit standard? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं प्रीवियस में. सो 10 + 10 20 मार्क्स का है. Credit policy refers to the decisions on the maximum amount of credit that will be allowed to customers. In simple words, amount of risk a firm is willing to undertake in its sales activities. Sales means credit sales activities. And here a credit policy may be of two types, liberal or rigid. And where credits are freely allowed to customers, that is called liberal policy. And where limited amount of credit is allowed to customers, that is called a rigid credit policy. Now let's see the main objectives of this policy. Okay. First, to increase sales, to increase profits, to maintain liquidity, to meet competition. These are the major objectives of credit policy. Very simple. And let's see the role of credit period in credit policy. Okay, what is credit period? The time allowed to customers to pay for their purchases is known as credit period. It directly affects the investments, and longer the credit period, more will be the investment required by the company. Longer credit periods, increases the chances of bad debts. It also raises the cost of collecting debts, है ना, कॉस्ट इंक्रीज कर लेगा. एंड ये सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर अ क्रेडिट पीरियड. दैट इज बायर स्टॉक टर्नओवर, नेचर ऑफ कमोडिटी, प्रॉफिट मार्जिन, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज. Like that, let's see the role of credit standards.
Now, this is the most important base to decide credit policy. Credit policy should be designed according to the standard of customers. Uh, it should be well balanced, and factors that affect credit standards are creditworthiness of a customer, capacity of the customer to pay the dues, character of the customer, capital invested by the customer and collateral or security that can be offered by the customer. इसके ऊपर भी वीडियो है, सो डू वॉच दैट दोज वीडियोस बिकॉज उसमें मैंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए. तो नाउ दिस इज द टाइम टू ईट द फ्रूट्स. फाइन. Question number 6, what are term loans? Discuss their features. Now, term loans are the loans taken from banks and financial institutions to purchase fixed assets. Very simple definition. The period of loan may vary from 3 to 10 years. The borrowers has to pay a fixed amount at regular interval of time, that is called installment. Term loans carry a fixed or floating interest rate, and these loans are generally taken by small business. The borrowers may need to pay a down payment or keep some type of security or mortgage, and these are primary source of income for banks and financial institutions. And these loans can be of three types: short term, medium term and long term. Short term, less than 1 year. Medium term is generally given between 1 to 3 years, and long terms may be from 3 to 30 years. So this was the answer. Now let's move on to the next question. Now this is part B. Discuss the different types of systematic risk. Again, very important question. The risk associated with the whole market segment is called systematic risk. It affects the whole economy. It is also known as market risk, and this type of risk affect the whole market and not to any particular sector, industry or firm. Now basically, there are 4 types of systematic risk: interest rate risk, market risk, exchange rate risk and political risk. These are generally external risk. तो जैसे इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट गवर्नमेंट में चेंज इट्स इंटरेस्ट रेट. मार्केट रिस्क का एग्जांपल हो सकता है जो फ्लक्चुएशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर के प्राइसेस. एंड एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी हो सकता है. एंड पॉलिटिकल रिस्क में वॉर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है. एंड फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. ए कंपनी नीड्स 5 lakhs फॉर ए न्यू प्लांट एंड द कंपनी इश्यूज 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10. And the company's earning before interest and taxes for the next 5 years are 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 and 1 lakh. And ये आपको निकालना है what is earning per share. एंड यहाँ पे एज्यूम करना है कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%. तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नाउ सी द सॉल्यूशन. कितना छोटा सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का. अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो अर्निंग यहाँ पे जैसे 5 years की प्रॉफिट दिए हुए है 10,000, 20, 40, 60 एंड 1 lakh. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 50%, तो इसका मैंने 10,000 का 50% फाइंड आउट किया 5,000, 20,000 का 10,000. इस तरीके से फाइंड 50% टैक्स और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये आ गया अपने पास में ये फिगर्स 5,000, 10,000, 20 एंड दिस इज कॉल्ड अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स. और इसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड करना है. यू विल गेट अर्निंग पर शेयर. वेरी सिंपल. 5,000 divided by 50,000 you get 0.1 rupee, that means 10 paisa. Again 10,000 divided by 50,000 you get 20 paisa. 20,000 by 50,000 you get 40 paisa and like that. ठीक है. और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर फिफ्थ केस में सबसे अच्छी है ₹1, 1 rupee. Okay, so this is the numerical. Let's move on to the next question. And question number 8, explain the ABC analysis and just-in-time techniques to manage the inventory. ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है.
एंड ABC एनालिसिस जस्ट इन टाइम, ये दोनों ही इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स हैं, वेरी पॉपुलर. नाउ लेट्स सी ABC एनालिसिस क्या है. अंडर दिस मेथड items are divided into three categories, A, B and C. And item A are the most important item and C are the least valuable. It helps to identify the items which are consumed the most and accordingly the management can regulate its supply and control them. Okay. इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियसली डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा. कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तीन टाइप के आइटम हैं. कैटेगरी ए में हाई कंजप्शन आइटम है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, दे आर एक्सपेंसिव एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, उनकी वेस्टेज कंपनी टॉलरेट नहीं कर पाएगी. एंड कैटेगरी बी में मॉडरेट आइटम्स, इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है एंड दे कंज्यूम 20% ऑफ द कंजप्शन एंड इनके ऊपर रिलेटिवली लेस कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड एंड दे आर ऑफ मॉडरेट वैल्यू. एंड कैटेगरी सी यहाँ पे बहुत ही कम कंट्रोल चाहिए, चीप आइटम्स होते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट आइटम्स. सो दिस इज़ ABC एनालिसिस एंड दिस इज़ जस्ट इन टाइम, जिसको हम लोग पॉपुलरली जिट बोलते हैं. नाउ इसके कुछ की सेंटेंसेस, फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको यू कैन नोट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द इन्वेंट्री कंट्रोल गुड्स आर ऑर्डर्ड ओनली एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड और नीडेड. द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट. जब गुड्स को रखते हैं स्टॉक में तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. रिड्यूसेस इन्वेंट्री वेस्टेज, बहुत ज़्यादा स्टॉक अगर रखते हैं तो उसमें वेस्टेज होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन, स्मूथ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चालू रह सकती है. प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जो प्रोड्यूसर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, दे ऑलवेज यूज़ जस्ट इन टाइम टेक्निक. एंड द प्रोड्यूसर्स आर बर्डन फ्री, नो टेंशन, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा नहीं है एंड वो लोग वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो उनको पसंद है, राइट. तो ऐसे ही कुछ इसके की सेंटेंसेस, ये भी मैंने इसके ऊपर भी बहुत पहले वीडियो बनाया था. एंड देन शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में फ्रेंड्स एज यू नो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2 करने हैं आपको. फर्स्ट फैक्टरिंग. नाउ फैक्टरिंग क्या होता है? इट इज़ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच अ फर्म सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स, दैट मीन्स इनवॉइसेस, to a third party who is known as factor. Then it is done to meet immediate cash needs and there are parties involved in it. Who are the parties? Seller, factor and debtor. Seller जो इसको सेल करता है factor को, receivables को, और factor जो इसको इसकी right लेता है and debtor जिससे पैसा वसूल करना है. And a factor gets the right to collect the dues from the debtors. It is also known as invoice discounting. And factoring is more popular method used by the exporters. Let's move on to the second short note, financial leverage. Now it is a technique of using debt instead of equity to acquire assets and projects. ठीक है, डेट को ज़्यादा यूज़ करना है, इक्विटी को कम, फिर भी यू हैव टू मेंटेन ए गुड बैलेंस. एंड फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ये ध्यान में रखना है. कंपनी शुड मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस and they must generate a higher rate of return rather than interest payment. क्योंकि डेट कैपिटल को जब यूज़ करेंगे तो डेट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उससे ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट करना चाहिए, अदरवाइज कंपनी का लॉस हो जाएगा. ओके. एंड दिस फाइनेंशियल लिवरेज इज सूटेबल फॉर कंपनीज विच आर इन प्रॉफिट्स. ऑलरेडी जिसकी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनको ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए. एंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिवरेजेस रेशियो जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लाइक डेट इक्विटी रेशियो एंड ऑल दैट. ओके. द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. नाउ इसके ऊपर भी मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको आपको एक्सपैंड करके आंसर्स क्रिएट करना है. द फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक सर्विसेज. और ये फंड कहाँ से आता है? प्राइवेट लोगों से आता है. दैट मीन्स प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया जाता है एंड द लोन इज़ रिपेड फ्रॉम कैश फ्लो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वहाँ से जो कैश फ्लो आता है वो फिर यूज़ किया जाता है लोन रिपेमेंट करने के लिए, राइट.
And again, there are two types of financing arrangements, such as debt financing and equity financing. ये तो जानते हैं हम लोग. And funds are arranged from public private company. Just now I told you about this. And the last short note is lease financing. ये फ्रेंड्स, ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो ये सारे वीडियोस के जो जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे एग्जाम्स में, वो सारे वीडियोस जहाँ से क्वेश्चंस आपको जिनके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी. ज़रूर से देखें एंड समझें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. डिटेल्ड में आप समझ में आ जाएगी आपको. एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में बस इतना ही. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another topic. Keep watching, sharing, and keep the channel subscribed, and also share it to your friends. Thank you very much for watching.